Hello students, today we are here to discuss the CUET economics paper for the year 2022. We'll be discussing question by question. Let us start with question number 1. You can see first question is economic variables such as national income and profits can be classified under which of the following heads? Children, you are aware that stock concept implies a concept which is measured at a particular point of time, right? Whereas flow means a variable that is measured over a period of time. National income and profit, they both are measured over a period of time, not at a point of time. And hence the correct answer to this question is option number 2. That is the flow concept, right? Let us proceed further with question number 2. The next question says elasticity of demand is constant and equal to 1 at every point on the demand curve. Now it implies that we are talking about a unit elastic demand curve in this question. You are aware that if the demand curve is horizontal straight line, the elasticity is infinite. If the demand curve is vertical straight line, the elasticity is 0. And if it is a normal downward sloping curve, the elasticity differs at different points. However, we know that अगर elasticity किसी good की demand की 1 है, तो उस good के ऊपर total expenditure of the consumer would remain constant throughout. और अगर total expenditure constant है, तो इसका मतलब demand curve कैसा होगा? Rectangular hyperbola. You are aware कि अगर एक demand curve rectangular hyperbola है, तो what does it imply? The area of all the rectangles that are formed below the demand curve would be exactly equal. And what does the area of a rectangle below the demand curve represents? The total expenditure. अगर सभी rectangles का area बराबर है, इसका मतलब इस गुड पर कोई भी प्राइस हो, खर्चा बराबर हो रहा है, इसका मतलब elasticity is 1. So here the correct option is option number 4, right? Let us proceed with question number 3 then. You have to name the architect of Indian economic planning. Now you are aware that William Digby, V.K. R.V. Rao and Dadabhai Naoroji, these 3 names have the credit of measuring the GDP of the country for the very first time during the British rule. दादाभाई नारोजी ने पहली बार हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी मेजर करने की कोशिश की 1870 के आसपास. उनको फॉलो किया विलियम दिग्बाई ने और वीके आरवी राव ने यही काम किया 1931 में. यानी इसके ये तीनों ऑप्शंस नहीं है क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई इंडिपेंडेंस के बाद. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, पीसी महालानोबिस. You need to remember this, children, that architect of economic planning in India is PC Mahalanobis. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिख देते हैं, बट जवाहरलाल नेहरू was the chairman of planning commission. However, the architect of economic planning was PC Mahalanobis और उनकी गाइडेंस में सेकेंड 5-year प्लान ऑनवर्ड्स बनाना शुरू किया गया. So the correct option is option number 2, that is PC Mahalanobis. Question number 4. Which of the following is not included in human development indicators? ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 इंडिया चाइना पाकिस्तान से है, यानी द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान. अगर आप उसका लास्ट सेगमेंट देखेंगे तो उस चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात किया हुआ. देयर इज अ लॉन्ग टेबल जिसके अंदर लगभग 10-11 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं. उस टेबल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी है, एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन भी है एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा भी है. द ओनली इंडिकेटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 1, विमेन एम्पावरमेंट. Let us move on to the next question. Which of the following statements are incorrect? Now, in this question, I think the answer is, the options that are given, उनमें से करेक्ट ऑप्शन मिसिंग है. इस क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था बाद में, इसको ठीक कर दिया था एनटीए वालों ने, इसके मार्क्स सभी बच्चों को दिए गए थे. द ऑप्शंस आर करेक्ट फ्लो ऑफ, सी द फर्स्ट
Option number A is circular flow of income does not take place in a closed economy. Children, what is meant by closed economy? Closed economy is an economy जिसका rest of the world के साथ कोई relationship नहीं है. It could be a two-sector economy with only households and firms, or it could be a three-sector economy with households, firms and government. And you are aware, चाहे two-sector economy हो, 3 हो या 4 हो, circular flow हर economy में होता है. इसका मतलब statement A गलत है. Real flow consists of flow of factor services from households to firms. You are aware, circular flow दो तरह का होता है, एक real और एक money. Real flow के अंदर there is a flow of goods and services. Households provide factor services to the firms and firms give finished goods and services. तो यहाँ पर यही बात की है that it involves factor services flow from households to firms. So statement B is correct. ये statement सही है. Statement number 3 यानी C है, in a two sector economy total production equal to total consumption. Now this statement is incorrect. ये गलत statement है. Even if it is a two sector economy with households and firms, whatever is produced is either consumed or invested. इसका मतलब in a two sector economy total production is not always equal to total consumption. It is equal to total consumption plus total investment, which implies that option number C is also incorrect. ये statement भी गलत है. Money flow consists of flow of factor payments from households to firms. Need to remember that it is not the households that make factor payments to firms. It is the other way around. बेटा फर्म्स देती हैं फैक्टर पेमेंट्स हाउसहोल्ड्स को, हाउसहोल्ड्स नहीं देते फर्म्स को फैक्टर पेमेंट्स, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी. दे ऑल आर इनकरेक्ट. ये तीनों गलत हैं, लेकिन ये ऑप्शन इस क्वेश्चन में मिसिंग है. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट इसका ऑप्शन है ए, सी एंड डी, and that option is not given in this question. Let us move on to the next question. Identify the correct statements regarding money supply. Now there are 5 statements given. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये पता लगाना है. आपकी सबसे पहली स्टेटमेंट है मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. अगेन मैंने आपको पहले भी बताया, स्टॉक का मतलब अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एंड यू आर अवेयर मनी सप्लाई की डेफिनेशन है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held in the form of currency by the general public and demand deposits, net demand deposits with commercial banks at a given point of time. Because money supply is measured at a point of time, therefore this statement is correct. और अगर मनी सप्लाई स्टॉक है तो फ्लो हो ही नहीं सकता, यानी बी इनकरेक्ट हो ही गई. If I talk about the third statement, money supply is the currency with the public and demand deposits in the banks. By definition, ये statement भी correct है. And if C is correct, it means it is including only currency held by public, not currency held by banks. Therefore, ये statement गलत हो गई. And this is a concept of real flow. Real flow के अंदर there is a movement of goods and services, जबकि money supply में ऐसा नहीं है. इसका मतलब option number E भी incorrect है. Therefore, only 2 statements are correct, A and C. And hence, my correct answer is option number 1. Now let us move on to question number 7. Given the following set of data, you have to calculate equilibrium. अब equilibrium income calculate करना है. Children, you are aware that income is equal to consumption plus investment. At equilibrium, income is equal to consumption plus investment, which implies that it is equal to 100 plus 0.8y plus 260. That is equal to y, right? Now, if I bring this 0.8 on this side, y minus 0.8y is equal to 360. Therefore, the answer that will be coming is 1800. And hence, the correct option in this question is option number 4, that is 1800. I'm repeating. हमें मालूम है इक्विलिब्रियम पर एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड यानी C प्लस आई. सिंपली पुटिंग अप द वैल्यूज, मैंने यहां पर जस्ट वैल्यूज डाली हैं. y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y प्लस 260. मैंने ये वाला 0.8 इधर ले आया हूं, तो y माइनस 0.8y
is equal to 360, and the answer turns out to 1800. Let us move on to the next question. Question number 8. Suppose a country only produces bread. In the year 2000, it had produced 100 units of bread and price was 10. In 2001, the same country produced 110 units of bread at a price of rupees 15 per unit. What will be the nominal and real GDP? Now, you are quite aware, in order to calculate nominal GDP, what do we need to do? We have to multiply the price of the current year with the quantity of the current year. Now, it implies that price in the current year is 15 and quantity in the current year is 110. So, nominal GDP is 1650. And real is price of the base year multiplied by quantity of the current year. So, what is the price in base year? 10, and quantity of current year is 110, yani ki 1100. So, the nominal GDP is 1650 and real is 1100. Therefore, the correct option is option number 3. Let us move further. Identify the quantitative tools used by RBI to control money supply. Children, you are aware कि RBI दो तरीके के टूल्स यूज करता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मेजर डिफरेंस क्या है? क्वांटिटेटिव का असर हर किसी पर एक जैसा होता है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं. तो यू आर अवेयर, मॉरल सुएशन एक क्वालिटेटिव टूल है, तो ये क्वांटिटेटिव नहीं है. Bank rate is a quantitative tool. CRR is a quantitative tool. Open market operation is a quantitative tool, and marginal requirement is a qualitative tool. तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में 3 है क्वांटिटेटिव टूल्स, B, C and D. So the correct option is option number 2. Let me move to question number 10 now. Question number 10 says you have to match this list 1 with list 2. Now this is very easy. This is just a remembering or learning based question. You are aware planning commission form हुआ था 1950 में. ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला फेज मिड 1960s, टू बी प्रिसाइज 1966-67 में. कार्वे कमिटी जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फॉर्म की गई थी, ये फॉर्म की गई थी 1955 में. और फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज formed in the year 1948. So the answer should be A 3, B 4, C 2 and D 1. Therefore the correct option is option number 1. Right? Next question says, question number 11. Rupees 48,000 crore is allotted for PM Awas Yojana in this year's budget. Identify the government objective. Now, this is something which is very important for you people to understand. क्योंकि बहुत बार बच्चे ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने में गलती करते हैं. बेटा, अगर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें हमें ये आइडिया दिया है कि अमीरों से पैसा लेकर के और गरीबों को दिया जा रहा है, तो हमारा आंसर होता रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज. लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है. यहां पर सिंपली कि गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना के लिए इतना पैसा एलोकेट किया है, तो इट मींस द गवर्नमेंट इज सिंपली एलोकेटिंग द रिसोर्सेस, and therefore the correct option will be option number 3, that is reallocation of resources. Right? Let us move on to question number 12. If the reserve ratio is 10% and initial deposits with commercial banks are 450 crores, the total money creation by banking system. So you are aware what is total money creation? Formula क्या होता है total money creation का? It is 1 upon required reserve ratio into initial cash deposits. Right? Now, in this question, the reserve ratio is 10%, yani 1 upon 0.1, and the initial deposits are 450, which implies the total credit created should be 4,500, and therefore the correct option in this case would be option number 4, yani ki 4,500 crores. Right? Let us move on to the next question. Which of the following is considered as an intermediate good? Now, you all are aware. What are intermediate goods? क्या होते हैं intermediate goods? The goods which are either meant to be fully consumed by a production unit for further production,
or are meant for resale by the production unit in the same accounting year in which the goods have been produced. यानी जिस साल गुड का प्रोडक्शन हुआ उसी साल या तो प्रोड्यूसर ने उन गुड्स को किसी और गुड को बनाने में इस्तेमाल करके खत्म कर दिया या फिर उन्हें आगे बेच दिया. नाउ लेट अस सी इन दोनों क्राइटेरिया में से कौन फुलफिल कर रहा है. मोबाइल परचेज बाय अ स्टूडेंट, डू यू थिंक कि स्टूडेंट उसको आगे बेच रहा है या फिर उसी साल उसको किसी और गुड को प्रोड्यूस करने में यूज करके खत्म कर रहा है? नहीं. इसका मतलब मोबाइल इज अ फाइनल गुड. कार परचेज बाय हाउस होल्ड, बाय सेम लॉजिक ये भी फाइनल गुड है. वेजिटेबल परचेज बाय हाउस होल्ड ये भी फाइनल गुड है. तो एक ऑप्शन रह गया सीड एंड फर्टिलाइजर परचेज बाय अ फार्मर. अब फार्मर अगर सीड और फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है तो उसे क्रॉप को उगाने के लिए यूज करके उसी साल खत्म कर दे रहा है. Therefore, the correct answer to this question is option number 3, that is seeds and fertilizer purchased by a farmer. Let us discuss question number 14 now. You have to again match the list. You are aware monetary base का क्या मतलब होता है? Monetary base का मतलब the broader definition of money. Broader definition के अंदर क्या क्या आता है? Currency, demand deposits, and even time deposits by the commercial banks, right? Similarly, if I talk about assets, liabilities, and credit control, credit control किसका काम है? RBI. Therefore, D के साथ ऑप्शन नंबर 2 जाएगा. Now see, बहुत बार क्या करना पड़ता है children, you have to go by elimination method also. अगर मुझे बाकी करेक्ट आंसर्स नहीं पता तो मुझे मालूम है डी के साथ ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, दैट इज सेकंड ऑप्शन. तो लेट अस चेक इट. मॉनिटरी बेस के अंदर करेंसी आती है, बिल्कुल आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. बी एसेट्स, ऑप्शन नंबर 1. लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक्स, बैंक्स के लिए लोन्स क्या होते हैं? जो बैंक ने दूसरों को लोन दिए हैं उन बैंक्स के लिए वो एसेट्स हैं, और जो लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट्स कराए हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी है. इसका मतलब माय ऑप्शंस ए इज 3, बी is 1, C is 4, and credit control is the function of RBI. So my correct option in this correct answer to this question should be option number 2. Let me move further. Which of the following is the apex body to coordinate the activities of all institutions involved in rural financing system? I think no question can be easier than that. ऑप्शंस इतने आसान है, आप देखकर ही पता लगा सकते हैं. नबार्ड, आपको मालूम है नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? व्हेन वाज नबार्ड एस्टेब्लिश्ड? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982. एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड? क्या था पर्पस नबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट का? यही कि रूरल एरियाज के अंदर रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, रूरल फाइनेंस को फैसिलिटेट करने के लिए नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. Therefore, the correct option is option number 1. Let me proceed further. Infrastructure is divided into 2 categories. Which are these 2 categories of infrastructure? Children, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन बिकॉज क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो लेट अस आंसर इट. हमें मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. और क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4. लेट अस प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं. What would be the value of investment multiplier if MPC is equal to MPS? Very interesting question. Children, आपको मालूम है that MPC plus MPS is equal to 1. Now, अगर MPC और MPS दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब MPC is equal to MPS is equal to 0.5. और हमें यह भी मालूम है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon MPS. इसका मतलब 1 upon 0.5, which gives me 2. Therefore, the correct answer to this question is option number 3. The value of multiplier will be 2. Let us proceed further. Question number 18. Which of the following is a function of RBI? No question can be easier than this. Does RBI accept deposits from general public? No, it does not. Does it give loans to the general public? No, it does not.
Does it creates credit? No, that is also a function of commercial bank. इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों कमर्शियल बैंक के फंक्शन है. Only the third option, that is banker to the government, is the function of RBI, and hence my correct answer to this question would be option number 3. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर. अगेन इट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. अगर एमपीसी 0.75 है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 करोड़ है, तो हमें कंजम्पशन लेवल फाइंड आउट करना है अगर इनकम 8,000. अब आपको मालूम है कि कंजम्पशन की इक्वेशन क्या होती है, सी बार प्लस बी इंटू वाई. तो इन दिस केस व्हाट इज सी बार, 100. व्हाट इज बी, 0.75. एंड व्हाट इज वाई, इनकम कितना दिया हुआ है, 8,000. तो इसका मतलब 100 प्लस 8,000 का 75% कितना हुआ, 6,000. So the correct answer should be 6,100, and hence the correct option would be option number 2, yani 6,100 is the correct answer to the question. Right? आगे चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अकरेंस. यानी पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. अब आपको मालूम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब एस्टेब्लिश हुई, 1949. फिर ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन एनसीईआरटी के हिसाब से 1965. एक्चुअली 1966 में हुआ, लेकिन एनसीईआरटी कहती है 1965, तो 65 मान लेते हैं. फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन पाकिस्तान 1956. फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया 1951. एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान 1988. अब हमारे लिए इसको अरेंज करना बिल्कुल आसान है. सबसे पहले ए, उसके बाद डी, देन सी, देन बी एंड ई. सो करेक्ट सीक्वेंस इज ए, डी, सी, बी एंड ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2. ए, सी, डी, sorry, it is A, D, C, B and E. I'm sorry. The correct option is option number 4, not 2. Right? सबसे पहले A 1949, and then D 1951, 1956, 1965 and 1988. Right? So the correct option is option number 4. So which of following is not a function of central bank? Yes. I think यहाँ पर not word नहीं होना चाहिए था. And the correct option in that case would have been option number 3, यानी lender of last resort. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. If tea and coffee can be used in place of one other, which of these following statements hold true? आपको मालूम है टी एंड कॉफी अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. यानी अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी. लेट अस सी द ऑप्शंस देन. Increase in price of tea leads to decrease in demand for coffee. The statement is incorrect. Increase in price of tea leads to increase in demand for coffee. Option is absolutely correct. Tea and coffee are substitute goods. Absolutely correct. Decrease in price of tea leads to increase in price of coffee. Incorrect, क्योंकि indirect relationship show कर रहा है. And tea and coffee are complementary goods. Again incorrect. That means only 2 of the statements hold true, B and C. Therefore, my correct answer is option number 4, B and C only. Let us move to question number 23 then. Suppose the producers plan to add rupees 100 crore worth of goods to her stock by the end of the year. However, due to an unforeseen upsurge of demand for her goods, she has to sell goods worth 30 crores from her existing stock. Now determine ex ante investment and ex post investment from the above information. Children, again you need to understand very very clearly. Ex ante का मतलब होता है planned, जबकि ex post का मतलब होता है actual. अब इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने या इन प्रोड्यूसर्स ने प्लानिंग कितना किया था कि कितना इन्वेस्ट करेंगे, 100 करोड़. लेकिन
Due to an unforeseen upsurge of demand, she had to sell goods worth 30 crores from her existing stock. इसका मतलब 30 करोड़ का सामान उसने बेच दिया, तो कितना रह गया उसके पास? ओनली 70, यानी व्हाट इज द एक्चुअल स्टॉक लेफ्ट विद द फर्म? 70. Therefore, the ex ante planned one is 100 and ex post, yani actual, is 70. And hence the correct answer to the question is option number 2, 170. Right? Let us proceed further. What is the value of education cess levied on union taxes by the government of India? Now, this is a question again, which is which can create doubts in the minds of the children also, क्योंकि एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सेस है वो है 2%, लेकिन ये 2% 2004 में जब लगाया गया था तब 2% था। गवर्नमेंट ने इसको बाद में इंक्रीज करके एक बार 3 किया और एट प्रेजेंट इट स्टैंड्स एट 4%, जिसका मतलब 4% इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ। तो द क्वेश्चन शुड हैव बीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन सेस लेविड ऑन यूनियन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज लेविड इन द ईयर 2004। तो इसका मतलब आप उसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से इसको आंसर करेंगे जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2%। आगे चलते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका आंसर भी है, but you can understand it in very very easy manner. Do you think organic farming would be responsible for land degradation? No. Do you think planned irrigation system would be responsible for land degradation? Again, no. Forest fire and overgrazing? Yes. Excessive use of fertilizers and pesticides? Yes. Shifting cultivation. You keep on changing the crops. Again, that is not the correct way or correct answer for land degradation. Rather, organic farming, planned irrigation system और shifting cultivation से land की quality improve होती है. Therefore, the options or the factors that are responsible for land degradation are B and D. That is forest fire, overgrazing, and excessive use of fertilizers and pesticides. And therefore, the correct answer is option number 2. Right? आगे चलते हैं। Which of the following is not a reason for excess demand? You are aware what is excess demand? क्या होता है excess demand? When aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो हम इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड। अब क्यों हुआ होगा एक्सेस डिमांड? डिमांड क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे बढ़े होंगे, या तो सेंट्रल बैंक ने पैसा बढ़ाया या फिर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। कैसे? टैक्स वैक्स कम हो गए होंगे। तो रिडक्शन इन टैक्सेस इज अ रीजन? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि अगर टैक्सेस घटे तो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा, ड्यू टू विच दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर। फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी इसका मतलब ओवरऑल कंजम्पशन विल फॉल, और अगर कंजम्पशन कम होगी तो डिमांड विल फॉल। इसका मतलब फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नॉट द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। बाकी इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बढ़ना या टैक्सेस का घटना, इन तीनों की वजह से ही ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। Therefore, the correct option to the question is option number 2, fall in the propensity to consume. क्वेश्चन नंबर 727 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव मेजर। रेपिटेशन के तौर पर ही आप देख सकते हैं, पहले क्वांटिटेटिव पूछा था, अब क्वालिटेटिव पूछ लिया। कौन सा क्वालिटेटिव मेजर नहीं है? आपको मालूम है मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव है, मॉरल सुवेशन क्वालिटेटिव है, और सिलेक्टिव कंट्रोल भी क्वालिटेटिव है। तो ये तीनों तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। रिवर्स रेपो रेट इज अ क्वांटिटेटिव measure of monetary policy, and therefore the correct answer to the question is reverse repo rate. अब हमें करना है अगेन मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 28 सेज मैच द फॉलोइंग। एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन। तो ए का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई, तो इसका मतलब बी का ऑप्शन 4।
प्रधानमंत्री जन धन योजना, खाते खुलवाना, नए अकाउंट्स खुलवाना, more than 30 crores account have been opened in the last 8-9 years. So promoting savings. And Rozgar Yojana, giving self-employment opportunities, which implies A2, B4, C3, and D1. And therefore the correct option is option number 1. A2, B4, C3, and D1. So the correct option is option number A1. In China, commune system is related to which sector? You are aware about this. Children, जब 1958 में 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चाइना के अंदर आया तो उसका पर्पस था चाइना को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बनाना। अब इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बनाने के लिए एक काम तो ये किया गया कि लोगों को कहा गया कि अपने बैकयार्ड्स में भी आप इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करें, और दूसरा ये कि एग्रीकल्चर से हमें लेबर शिफ्ट करनी है तो वहां पर कम्यून सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो कम्यून सिस्टम था ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने ये तय किया दैट द पीपल वुड बी कल्टिवेटिंग द लैंड टुगेदर इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट इंडिविजुअली। द लैंड शुड बी कल्टिवेटेड इन ग्रुप्स, and therefore commune system is basically related to agricultural sector, and hence the correct option to this question is agriculture. Identify, next question, question number 30 says, identify the statements that stand true during deficient demand. Again, remember, what is deficient demand? A situation, क्या होती है deficient demand? When aggregate demand falls short of aggregate supply at full employment. यानी कंट्री का जो पोटेंशियल आउटपुट है, जितना कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है, डिमांड कम है और पोटेंशियल ज्यादा है, तो एक्चुअल आउटपुट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट. डू यू थिंक इट इज करेक्ट? इट इज. Potential output falls short of? No. So this is incorrect. Actual demand is less than expected demand. Demand is falling short of aggregate supply, so that means actual demand is falling short. ये भी correct है. And expected demand is less than actual demand? No. इसका मतलब A and C are the correct options, and therefore the correct option is option number 2, A and C only. One thing, actual output is falling short of potential output, and actual demand is falling short of expected demand. Question number 31 पर आते हैं. Suppose you are a member of advisory committee to the Finance Minister of India. Finance Minister is concerned about the rising revenue deficit in the budget. Which measure would you suggest to control the rising revenue deficit? अब देखिए revenue deficit क्या होता है? क्या होता है revenue deficit? Revenue deficit is excess of revenue expenditure of the government over its revenue receipts. अब अगर गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू डेफिसिट घटाना है तो या तो खर्चे कम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं वो घटाने पड़ेंगे, या फिर गवर्नमेंट को अपनी रूटीन इनकम बढ़ानी पड़ेगी. अब रूटीन इनकम बढ़ाने के लिए सरकार या तो टैक्सेस बढ़ाए, और खर्चे घटाने के लिए सब्सिडीज ग्रांट्स वगैरह कम करना पड़ेगा. अब आप देखिए ऑप्शंस क्या कह रही हैं. इंक्रीज ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. ग्रांट बढ़ाने से तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा, जिससे रेवेन्यू डेफिसिट और वाइडन अप हो जाएगा, राइट. एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है. सब्सिडी बढ़ाने से भी ये होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और अगर गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ाती है तो भी इससे गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे. गवर्नमेंट को खर्चे घटाने हैं और गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यूज बढ़ानी है, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एकमात्र ऑप्शन टू इंक्रीज द टैक्सेस, and therefore the correct option in this particular question is option number 3, that is to increase the taxes. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. 5-year plans in India were guided by which of the following goals? आप गोल्स को कैसे याद रखते हैं? मैं जनरली कहता हूं बच्चों से कि आप गोल्स को याद रखिए GEMS, जेम्स. जी का मतलब ग्रोथ, ई का मतलब इक्विटी, एम का मतलब मॉडर्नाइजेशन, और एस का मतलब सेल्फ रिलायंस. सो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस.
ये चारों you can understand that they all four are the goals of 5-year plans. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए, बी, डी एंड ई ये चारों गाइडेड गोल्स हैं, ए, बी, डी एंड ई, एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Right? The question was 5-year plans were guided by which of the following goals? ये चारों ही हैं. A, B, D and E, all four are yani the goals, which guided the 5-year plans in India, and hence the correct option is A, B, D and E. इकलौता option जो नहीं है, that is C. Let us move on to the next question. Identify the casual worker from among the following alternatives. Children, you are aware, workers तीन तरह के होते हैं. कौन कौन से तीन कैटेगरीज के वर्कर्स होते हैं? सबसे पहले रेगुलर सैलरीड, फिर कैजुअल वर्कर्स, और उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. रेगुलर सैलरीड जो एक फिक्स्ड सैलरी पर काम कर रहे हैं, कैजुअल जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेज बेसिस पर काम करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं. लेट अस सी इनमें से कौन कैजुअल वर्कर है. संतु who works on the farm of Sohan as he doesn't have his own land. Now Raghav who owns a restaurant, अभी राघव कौन हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयड. Angad, who is a lawyer running his own firm, ये भी self-employed. Radha is a nurse working in a hospital, regular salaried. इसका मतलब the only casual worker is Santu, who's working on the farm of Sohan, क्योंकि उसका खुद का लैंड नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी पर काम करता है, इसलिए यहां पर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. रेजिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. नाउ रिमेंबर, कंट्री की करेंसी की वैल्यू दो अलग अलग सिस्टम्स में बढ़ सकती है. अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में उसे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है तो इसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन, और अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन. तो हमें यह तो पता है कि वैल्यू ऑफ करेंसी अगर बढ़ रही है तो या तो एप्रिसिएशन होगा या रीवैल्यूएशन. बट आपको याद रखना है, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से एसोसिएटेड क्वेश्चन है तो आंसर आएगा रीवैल्यूएशन, और अगर इस क्वेश्चन में होता फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम तो हमारा आंसर होता एप्रिसिएशन. राइट? आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. वेरी हाई फर्टिलिटी रेट. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, कंपैरिजन ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. अब तीनों कंट्रीज का अगर आप डेमोग्राफिक चार्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रेट. अब देखिए, चाइना के अंदर फर्टिलिटी रेट है लगभग 1.6 के आसपास, इंडिया के अंदर फर्टिलिटी रेट है 2.05 के आसपास, और पाकिस्तान के अंदर फर्टिलिटी रेट है 3.5 के आसपास. इसका मतलब वेरी हाई फर्टिलिटी रेट एप्लीकेबल टू पाकिस्तान. वन चाइल्ड नॉर्म कौन सी कंट्री में अडॉप्ट किया गया? 1979, चाइना में. हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, चाइना की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमसे 1/3 है, ओनली 146. पाकिस्तान की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लगभग 250, और इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 450, which implies highest density of population is applicable to India. And if I talk about mixed economy का मतलब the economy where both private and public sector go hand in hand. आपको मालूम है चाइना इज अ प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी और इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी है. Therefore the correct option is D1. So यहां पर हमारे A के साथ 2, B के साथ 3, C के साथ 4 and D के साथ 1, and therefore correct option is option number 2. A 2, B 3, C 4 and D 1. The correct option is option number 2. Let us move further. When consumption function starts from y-axis, it indicates that, children, now this question is very simple. You are aware that 99.9% cases consumption function y-axis में पॉजिटिव रेंज से ही शुरू होता है. राइट? इसका मतलब जब इनकम जीरो है उस समय भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है. There is some positive consumption even when income is zero. So let us look at the options now. Consumption is zero when income is zero. No, incorrect. Consumption is positive when income is zero. बिल्कुल सही.
सेविंग इज नेगेटिव व्हेन इनकम इज पॉजिटिव, वी कैन नॉट से इट विथ श्योरिटी। सेविंग नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सेविंग इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज जीरो, इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन 1 भी गलत है, 3 भी गलत है और 4 भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कंजम्पशन इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज जीरो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर पहुंच गए हम लोग। Owing to the current political instability across many countries, Indian rupee has sharply lost its value in terms of dollar. Right? यानी हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर की टर्म्स में कम हो गई है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, अगर रुपए की वैल्यू घटी है डॉलर्स की टर्म्स में, इसका मतलब अब अमेरिकन को हमारे गुड्स खरीदने के लिए कम डॉलर्स देने पड़ेंगे और हमें उनका सामान खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे, ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। आई एम सॉरी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इन अदर वर्ड्स, हमारे इंपोर्ट्स कम होने चाहिए, है ना। वील बी रिक्वायरिंग, अब हम पहले के मुकाबले कम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि इंपोर्ट करना हमारे लिए महंगा पड़ रहा है, जबकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि अब वो हमसे ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो राइज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस, नो, हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फॉल इन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारे जो यूएस से इंपोर्ट्स हैं वो पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे। राइज इन एक्सपोर्ट्स टू यूएस, ये भी सही है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, राइट। एंड फॉल इन एक्सपोर्ट्स, नो, दिस इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बी एंड सी ओनली, राइट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन दोनों, इन चारों में से हम किसे इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते समय? शुगर परचेज बाय अ रेस्टोरेंट। चिल्ड्रन, आपको मालूम है रेस्टोरेंट प्रोडक्शन यूनिट है, शुगर खरीदेगा लेकिन उसे एज एन इनपुट इस्तेमाल करेगा किसी और सामान को बनाने में, इसलिए एक इंटरमीडिएट गुड है, नेशनल इनकम में नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल आएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल कंजम्पशन। कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉय अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो नहीं इंक्लूड होता। हाउएवर, अगर यहां पर एम्प्लॉय की बजाय एम्प्लॉयर लिखा होता तो इंक्लूड होता। एंड स्टील परचेज बाय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगेन एन इंटरमीडिएट गुड, नॉट इंक्लूडेड। Therefore, the correct option to the question is option number 2, expenditure incurred by households on goods and services. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी दैट रिलेट टू द क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी does not deal in, does not deal in, you have to pay the attention, does not, technique of production, you are aware technique of production का मतलब है labor intensive, capital intensive, and which problem deals with it? How to produce. So what to produce does not deal with technique of production. Does it deal with distribution of resources towards different goods produced? Absolutely yes. Does it relate to the quantities of different goods? Yes. And does it relate to combination of goods to be produced? Yes, capital versus consumer. Therefore, the only problem that what to produce does not deal with is the technique of production, यानी कि option number 1 is correct. Right? Let us proceed further. आगे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. Suppose in an economy only two goods are produced, A and B. You have to calculate GDP at market price from the table given below. Now, how do we calculate GDP at market price? Firm A का value added plus firm B का value added. Now, what is the value added by firm A? क्या होगा firm A का value added? Value added by A. It will be equal to what? Sales plus change in stock minus intermediate consumption. So how much is the sale? 50. How much is change in stock? Plus 20. Intermediate consumption है ही नहीं, तो value added by A is 70. Similarly by B, इसका sale 200, change in stock 30 and intermediate consumption 100.
तो 200 minus 170 इसका मतलब सॉरी 130 which implies 170. So total value added, total GDP at market price will be 70 plus 170, which gives me 240. 240. 50 plus 20, which gives me 70. 200 minus 30 minus 100. So 200 minus, oh, I'm sorry, a mistake here. This is not 170, this is only 70. 200 में से 130 गए, 70 बचे, इसका मतलब 70 और 70 140, right? So my correct answer is option number 2, that is 140. Is that clear? Let us proceed further. आगे चलते हैं. Question number 41 पर आते हैं. Now this is a case study based question. It is a long case study which is based upon sustainable energy resources, and there must be 5 questions which are based upon this case study. Now, such questions are very easy to do. Most of the times the answer is given within these case studies. Otherwise, you have to basically find it out, through your common understanding about the topic. Alternate fuel refers to, अब देखिए alternate fuel की बात हमें यहाँ पर की गई है, तो let us see what does alternate fuel refers to. India has been given a push for alternative fuels such as ethanol and more recently methanol to improve its energy security. India meets 85% of its crude oil requirement, 53% of natural gas, and 25% of coal requirement through import. Let us look at the options that are given here. Fossil fuel, is it an alternate fuel? Not at all. Conventional, again, जो बहुत समय से यूज होते हुए आ रहे हैं, no. Non-biodegradable energy resources, do you think that would be an alternate fuel? No. So the correct option should be, by common understanding, it is very, very simple to understand. Fossil fuel में क्या क्या include होता है? Coal, petroleum. Now these are not the examples of alternate fuels at all. Conventional energy sources, again, they are not alternate fuels because they have been into use for a very long period of time. Non-conventional energy sources, they are the recent ones, and therefore we are basically talking about non-conventional energy sources. जो biodegradable energy resources हैं, जो biodegradable यानी जो हो सकते हैं, they can also be classified under alternate fuel, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम ऑल्टरनेट फ्यूल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. रीड द फॉलोइंग केस स्टडी. सेम केस स्टडी कंटिन्यू हो रही है चिल्ड्रन, ये याद रखना है. इकोनॉमिक्स के पेपर में देयर आर 2 केस स्टडीज जिसके ऊपर बेस 5-5 क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आपने एक बार केस स्टडी पढ़ ली है तो आपको रिपीटेटिवली उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. न्यू एनर्जी पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एम एट प्रोमोटिंग, अगेन अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. क्या हमें लगता है कि कोई भी कंट्री की एनर्जी पॉलिसी फॉसिल फ्यूल सोर्सेस को प्रमोट करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल नहीं. कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जैसे कोल पेट्रोलियम को प्रमोट करने की कोशिश करेगी? नहीं. इंपोर्ट, क्रूड ऑयल इंपोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेगी? नहीं. तो व्हाट शुड बी द पॉइंट ऑफ फोकस? क्लीनर फ्यूल्स, सस्टेनेबल यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स जैसे सीएनजी, या एट प्रेजेंट हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सबको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी. Therefore, the correct option to the question is option number 4. India meets its crude oil requirement through domestic sources of. Now, क्योंकि fact based question है, that is why इसका आंसर हमें इस केस स्टडी से ही मिलेगा. आप सबसे ऊपर देखिए, इंडिया मीट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू इंपोर्ट. अगर हम अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट से फुलफिल करते हैं तो डोमेस्टिक सोर्सेज से कितना करते होंगे? आउट ऑफ 100%, if 85% is being met through import, तो only 15% would be met through domestic sources, and hence the correct option should be 15%. It is preferred as an alternate fuel over ethanol because now I believe that question की formation में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप यहां पर इट लिख रहे हैं तो यू आर नॉट क्लियर दैट वेदर यू आर राइटिंग दिस इट फॉर मेथनॉल और यू आर राइटिंग दिस इट फॉर एथेनॉल. सो चिल्ड्रन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको लग रहा हो
कि व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आप दोनों तरीकों से सोचिए। अब देखिए, इफ आई गो, अगर मैं इस इट को मिथेनॉल समझूं तो मेरा आंसर होना चाहिए बी एंड ई, जो कि इसमें ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब यहां पर इट की बात इथेनॉल की हो रही है, राइट। तो बी और ई को छोड़कर क्या क्या ऑप्शंस बच गए, ए, सी एंड डी। यानी इथेनॉल इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि वो एनर्जी सिक्योरिटी को हैम्पर करता है, एनर्जी सोर्सेस को पॉल्यूट करता है, और हमारी कंट्री में कोल भी अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यानी ए, सी एंड डी, दैट इज करेक्ट, राइट। लो कार्बन इकोनॉमी, लो कार्बन इकोनॉमी, oil marketing companies, methanol and ethanol. Again, which of these is being derived from biomass and naphtha? Let us look. Ethanol is primarily used for blending with gasoline, citing two benefits: substitution of gasoline to arrest riding crude oil benefit. Government of India regulate the prices of ethanol. Methanol can be derived from sources like natural gas, coal, naphtha and biomass. इसका मतलब methanol किससे derive होता है? Biomass, naphtha, etc. It means C के साथ हमारा correct option is 1. तो 3 और 4 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब मेरे को चूज करना है बिटवीन A and 2, 1 and 2, I'm sorry. So let us see. Ethanol is derived from sugarcane and molasses. We have already understood this. तो D के साथ it is 2. इसका मतलब if it is C1 and D2, तो my correct option is option number 2, right? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Now this is a new case study. This is a case study related to macroeconomics. For the business community, which of the following relates to budget 2022? These case studies would differ year to year automatically, and the answers to these are basically relative also in nature. For the business community, which of the following relates to budget 2022? For this, we have to go through this case study. पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। Budget 2022, which seeks to lay the blueprint for the next 25 years for growth in India, has been widely recognized by the business community as growth and infrastructure focused budget. तो हमें पहले पॉइंट में मिल गया यहां पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, फोकस ऑन ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके लिए हमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें मालूम है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि ये दोनों गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं। हाउएवर कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट पर लगता है और कैपिटल गेन्स भी इनकम पर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। तो बी एंड सी ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस हैं, एंड देयरफॉर माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें इस पर्टिकुलर डेटा से फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट करना है। लेट अस रीड द डेटा दैट इज गिवन हियर। Fiscal deficit in 22-23 is targeted at 6.4% of GDP. But for that, we need to understand the rest of the figures as well. Let us calculate it. कर लेते हैं calculate इसे। हमें मालूम है fiscal deficit is equal to total budget expenditure minus total non-debt budget receipts, yani all the budget receipts except borrowings. Now if I look at this, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहां पर दिया हुआ है 39,44,909, and the receipts excluding borrowings are 22,83,713. तो आई नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। टोटल बजट एक्सपेंडिचर, एज फार एज एक्सपेंडिचर इज कंसर्न, द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू स्पेंड this much, and the receipts excluding borrowings are estimated to be 22,83,713. Okay, is there any other information given? No. The interest expenditure, no, but that should be a part of the government proposes to spend.
All right, let us check this. What is the difference turning out to be? कितना है डिफरेंस इन दोनों का? 39, 44, 909 minus 22, 83, 713. It is 16, 61, 196. मुझे लग रहा है यहां पर 6 वैल्यू मिसिंग है. The correct answer is 16,61,196. तो यहां पर 6 और होना चाहिए था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. 16,61,196 करोड़. That will be the amount of fiscal deficit, right? Second last question पर पहुंच गए हैं चिल्ड्रन. मैच द फॉलोइंग. इंटरेस्ट पेमेंट. अब यहां पर हमें रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करना है. ओके, लेट अस सी. क्योंकि अगेन मुझे लग रहा है कि यहां पर ऑप्शंस दो रिपीट हो रही हैं, रेवेन्यू रेवेन्यू, बट लेट अस चेक इट. कोई बात नहीं. इंटरेस्ट पेमेंट. क्या आपको लगता है जब सरकार इंटरेस्ट पे करती है तो सरकार का कोई एसेट गिरता है? नहीं. क्या सरकार का कोई एसेट बढ़ रहा है? नहीं. क्या कोई लायबिलिटी कम हो रही है? नहीं. ये गवर्नमेंट के एक रूटीन खर्चा है. देयरफॉर ए इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर श्योर, राइट? लेट मी मैच ए विद 3. ग्रांट इन एड रिसीव्ड. अगर गवर्नमेंट को ग्रांट मिलती है तो अगेन इससे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को वापस नहीं करना, the government doesn't have to repay it, and therefore it will be a revenue receipt for the government. So the answer to B is 1. Borrowing and other liability, if the government is borrowing, that will be a capital receipt. तो I believe यहां पर capital receipt option missing है. हाँ, नजर ही आ रहा है चिल्ड्रन. यू कैन सी ये 3 दो बार रिपीट हो गया है, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी ऑप्शन नंबर 4, एंड दैट इज कैपिटल रिसीट. तो आप इसे अंडरस्टैंड करिए, राइट इट और अज्यूम इट टू बी कैपिटल रिसीट गिवन हियर, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा आएगा कैपिटल रिसीट. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर. जब सरकार फ्लाईओवर बनाती है तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, देयरफॉर इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो A3, B2, A3, B sorry, A3, B1, correct. A3, B1, C, 4, and D, 2. So the correct option is option number 1. A3, B1, C, 4, and D, 2. Yes. So correct option is option number 1. Last question. Which of the following statements is true? Again, for finding out the answer, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये case study. The lowest percentage wise increase in allocation is seen for Ministry of Jal Shakti. Let us see. The budget has not relied on EBR of loans for as far as ministry allocation is concerned. Highest percentage wise increase is seen for Ministry of Communication, Road Transportation and Jal Shakti. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि इसको हाईएस्ट में मिला है. हाईएस्ट परसेंटेज वाइज इंक्रीज इन एलोकेशन इज सीन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. ये सही है. बजट हैज रिलाइड हेवीली ऑन लोन्स फ्रॉम नेशनल सेविंग्स. नो. बहुत क्लियरली लिखा है बजट हैज नॉट रिलाइड ऑन लोन्स फ्रॉम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड. तो ये भी सही नहीं है. एंड गवर्नमेंट हैज नॉट डन वेल इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज. ये भी सही नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, राइट? That was about the discussion of the paper. Children, you can see paper बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन you need to apply your brain. You need to be very, what you can say, बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा और कई बार आपको कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा in order to attempt these paper and get 50 on 50, right? So that is all from my end. Let us end this discussion here. We'll be again meeting soon. Bye.